Namaskar. We would like to welcome you all on behalf of Independent Research Ethics Society, AYUSH Samriddhi International Webinar Series at milestone of 2740. Thank you. Thank you very much for joining. Today, we are celebrating or creating awareness on World Habitat Day 2025. This year's theme is Urban Housing Crisis Response. So without wasting much time, I would like to welcome Dr. Rishan Shuklaji from Jamnagar and Dr. Sakat Basuji from Canada. And the topic is Urban Housing Problems and Benefits. Rishan ji. इसमें मैं पहले सकत जी को बुलाना चाहूंगा। सकत जी का विचार क्लियर है? डॉक्टर नहीं सकत नहीं, कोई बात नहीं। अगर निशांत जी पहले बोल ले तो कोई बात नहीं। आप आइए आई ना, एम अवेलेबल। आइए ना, आप आइए। स्वागत। आप मुझे कह रहे हैं? यस यस। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके, थैंक यू वेरी मच। Once again, it's a pleasure to be a part of your platform. Urban housing has been a very important and sensitive issue, particularly in these days, with certain very serious challenging problems that we are seeing around the world. Why am I talking about this? As you would know, that recently there has been flash floods in Kolkata, and there has been similar incidents happening in Bangalore, Chennai, and other parts of our country, where in the big metropolis you would be seeing that we are undergoing a very serious waterlogging. That there is unprecedented rainfall. There is no doubt about that. There is no doubt that we do not clean out the sewage pathways and the entry of the drainage channels, so that, like, plastics and all kinds of waste that we are using are plugging up the system, and as a consequences, the challenge is we are not being able to clean it up, and as a consequence we are having a stagnation of the water flow, which is a very very serious problem. Sometimes the city uses pumps to clean out the water and things like that, and there is a lot of challenges for the people, because as has been the recent incident in Kolkata, that the government data says 12 people have been electrocuted. So there is water stagnation, and as you are trying to step out of your house, even in the highly metropolitan area, if you are setting your foot in this water, there are wires, live wires, that are getting detached or broken, and these live wires are getting in direct connection with the water, and people who are getting there at the same time is getting electrocuted. It's very very serious, and a very very important thing that we need to highlight is that it shows the challenges of urban housing. Now, why are we facing this kind of a problem? Is if you look into our cities, you will see that today, if you like, particularly in case of Kolkata, where the new town is a up an area which is coming up with more and more housing for a long time. There are people who are going there and buying flats and apartments. In every city in India, there is always a high demand for the residential building, apartment, flats, condos, always, because accommodation in cities, particularly all across the world, is always a crisis, is going to remain a crisis. And as our cities are our major centers of hub of education, training, experience, as well as our jobs and industries, there is no doubt that a large number of people will migrate from various other areas, sub municipalities or rural areas, into the city areas. There will always remain this problem, and in a developing country like India, this is a perennial issue, because there will always be migration of people into the cities. One of the big challenges of urban housing in countries like India is that we do not have a restriction. What do I mean by restriction? One of the very good things that we see about housing pattern systems in Western countries is that they put a cap. Say, for example, they will say a city A has a limit of 1 million population. As soon as the city will indicate that they are reaching a 1 million population, no more apartments other than business districts and things like that are allowed in the city.
Say, for example, another city has a capacity of 2 billion or 3 million people or something like that, or a 5 million. Then, as soon as the population reaches that stage, they will have a cap on the city, and they will not allow any more growth of real infrastructure, particularly in name of real estate, to take shape in the city. Why our Western countries have done that? It is because that they have seen that if every place, every location, every town, city, metropolis, municipality, premier cities, in whichever way we define, each one has a carrying capacity. There could be a town that can hold 50,000 people. There could be a city that can provide services to 1 million people, 2 million people, 3 million people. But it cannot be continuing in an indiscriminate manner expansion as it happens in India. I have been in Mumbai this year for a number of training programs that I was organizing in IIT Kharagpur. And one of the things that I saw, like we talk so much about Mumbai, so much about the infrastructure in the Mumbai and these Mumbaikars and this and that. I would consider Mumbai to be one of the dirtiest city of India, because what I saw in my own eyes is because the population of the city has been growing like crazy. Hundreds and thousands of people, not only from Maharashtra, from across the world are coming to Mumbai. Mumbai has been expanding. There are huge areas that are being added, but there is a capacity. The municipalities and the corporations which operate in the city of Mumbai do not employ enough people to clean the daily domestic garbage. They do not have the infrastructure, they do not have the number of hands you need to have on the ground to keep the city clean. So if you are traveling in Mumbai, forget about the very posh areas. If you go out a little bit on the suburbs, if you go out a little bit outside the main areas, you will see the city is running with garbage, with huge garbage being dumped on premier highways, premier roads, that is slowing down the traffic. It is detrimental to health, and particularly when there is rain. And because of this existing filth and waste material, that include plastics, furniture, raw materials, biomedical waste, vegetable waste, market waste, even in many places, industrial waste are being dumped on the roads and on the sideways. This is creating havoc. Now, Mumbai people are very proud of the city of Mumbai, but I would say impartially, it is one of the dirtiest city if you do the evaluation, because it could not be cleaned properly. They do not have enough employee on the ground to take this along with machines to clean it up and take the solid waste for processing. It is building up, and it's a hell. Even in close to places like airports and stuff, you will see that a filth has built up so indiscriminately that it is making vehicular transport, or even if you are trying to walk by your legs, on your legs, it is becoming challenging. This is very poor urban planning. So one of the things that is missing in a country like India, particularly with respect to urban planning and housing, is indiscriminate growth. Growth is good, but when the growth is overwhelming, then it turns into detrimental for the city. Why? Because you do not have the infrastructure to cater to so many people. Then, because you are getting money, because you can convert agricultural lands, unused lands, or forest lands in added areas and expand the city. Mumbai is becoming a huge, 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 huge big city. There is no doubt about that. But the maintenance of that city is extremely, extremely, extremely poor compared to a country like India at this point in 2025, because they are not having enough employees. They do not have enough infrastructure. So one of the biggest challenge of this urban planning in our country, particularly in India, is a huge influx of people, and the corporations under what you call corruption, malpractices, nepotism, as well as bad politics are expanding the cities beyond the capacity of the municipalities or corporations to handle them. As a consequences, the cities are collapsing, the services are collapsing. You cannot have enough hospital beds for a city that keeps on increasing. You cannot have enough schools and colleges and educational institutions if you keep on increasing. You cannot have an effective fire services. There is limitation on your resources. Then you have to come up with newer cities or satellite towns and stuff. This is a concept that is not available in India.
For example, if you take the case of a state of West Bengal, every emphasis, development, and focus has been expanding on the city of Kolkata, while there are many other major cities and towns across the state, say, for example, Siliguri in North Bengal, that has not been taken care of, that has not been given the same impetus as they have given for Kolkata. The same funding that they have wasted in Kolkata, if they would have used a part of this in developing other satellite towns, they would have become a much better place. For example, the Kalyani town, now close to the city of Kolkata, you can get there by train within 2 hours, has become extensively developed. There are more housing efforts and kinds of things going on. It reduces the pressure on Kolkata. But the tremendous pressure on cities like New Delhi, Kolkata, Hyderabad, Bangalore, Chennai, where everyone is looking for finding an accommodation in the city, becomes very challenging. So, for example, what are the challenges? How do we reduce pressure on a city and better urban planning for urban housing? Is that you develop satellite towns. You establish by just by having a new area dedicated to housing and infrastructure building is not enough. You also need to build up associated infrastructures such as communication. If you have metro connections, if you have circular trains, if you have buses, and if you have other road services made available between these places, then people will have not mind in moving to the satellite towns. What happens in a country like India is that there is extensive development in the metro cities, and then you start developing satellite cities. But if you go into satellite cities, you would see that there is very little infrastructure, particularly with respect to communication. For example, Salt Lake and Newtown areas are two areas which are expanding in the city of Kolkata in the eastern side. But the challenge is, if you are in the night time, you will find it extremely difficult to find public transportation or Ola, Uber, or a taxi to come to the major part of the Kolkata. The connectivity with rest of Calcutta in these areas at a particular specific point of time has become extremely challenging. So for senior citizens, even for school going students, particularly ladies working in those industrial sectors, they find it very difficult to find public transportation from this area to the main city, and it has given rise to many crimes. There has been crimes against women, there has been crimes against senior citizens. So the city has not been able to handle and manage properly. You not only need to develop a satellite town, you need to build communication links between that satellite town and the main town. Unless you build this, many people will never be interested in moving out to those areas. Because if someone asks me, Dr. Basi, you want to buy a flat or an apartment in Newtown? I would always say no, because I do not know that in the night, say 2 a.m. in the morning, if my mother is sick, I will not get an ambulance, I will not get a taxi, I will not get a Ola Uber from this area to come to the Kolkata to a good hospital at the lieu hours, because there the transport and communication the government has taken no initiative to develop, neither government wise nor private wise. As a consequences, only people having vehicles of their own could transport between these two parts. So middle income people, lower income group people, how would they like to move to satellite towns and stuff? So they are not interested, and huge number of real estate and buildings in these areas are lying vacant. The promoters are not being able to sell them. This is one set of big challenges. The other set of challenges with respect to urban housing has been indiscriminate illegal construction of buildings within the city limit areas. Yes, and sometimes by closing various ancient canals, water transport ways, water bodies, anything that you could see, the corporation being paid money illegally has turned these wetlands into housing estates. This is not the story of Kolkata. This is not just the story of Mumbai, Chennai, New Delhi, or Bangalore. This is just a story of India. This is the story of the entire world. This is happening across all cities around the world, where promoters, or who are called real estates in other countries, are the people who are these are land mafias or land sharks. They are buying lands at cheap rates, huge amount of land, and then trying to transfer them into real estate by bribing the local government or the regional government or the local administrative unit like the police, the corporation, the municipalities, to change and flout laws and forcefully establish construction of buildings in areas where there should not be any construction. If you look into the Gangetic Bengal, you will see how many high rise buildings have come up
along the shores of the Hooghly River. This is totally inadvisable because this is Indo-Gangetic plain is a fragile plain. The soil is very soft, and there are changes with respect to the river changing its course. So every time you have a building which is extremely close to the river belt or the river shoreline, there are high chances that this land will be eroded at some point, and these buildings will collapse. But there should have been no construction, whether it is coastal area, whether it is the freshwater riverine area. But everywhere, in every city of India, whichever government there is, where you will see that the laws have been flouted and construction has been allowed in fragile ecological zones. They were either soak pits for the cities. This means they were large water bodies where huge amount of water will accumulate. But here, there is no place for the water to go and get collected. All these open water body areas are being transformed into urban housing spaces, and this is having significant impact on the local biodiversity. Many of the city wildlife is vanishing, and the quality of life in city is deteriorating, and the best time to see is during the monsoon or the post monsoon period, as we are seeing it in India. If there are unprecedented rainfall or unprecedented continuation of precipitation due to climate change and other related factors, you will see that the cities are getting flooded because the channels are closed, the waterways have been plugged, every single water body, whichever was available, they have been made into constructions. Chennai used to be a city of lakes. If you go into Chennai this time, like when there was the last flood, people were using boats to travel and commute from one part of Chennai to other. This is no joke, but this is a reality that is happening because we are physically in the urban spacing, leaving no space for water accumulation or water storage to utilize the water into certain extent of the huge amount of water resources that we have, and that can be used in irrigation. The excess irrigation water in our countries could be easily stored in underground reservoirs so that we could use them at our leave period for irrigation and other purposes. We do not use them. What or they could have been also used in construction areas. What we are doing, due to this extensive city-based what I call urban misplanning, the construction of the house is drawing water from the water table, which is a very pure quality, high quality water. But in the major cities, illegally, the promoters are creating shallow sewage pumps, and they are dragging the water and taking this water down and down and down below, so that the water table is receding in many cities. In few years, in 10, 15 to 20 years, it is predicted that many of these cities in our country will have a huge drinking water issues because our groundwater table is falling apart, and the number of water processing treatment plants that you have may not be sufficient to cater to the huge population that are accumulating in the city. So we have urban misplanning. We have a huge amount of corruption where we are not paying attention how to build our cities in modern terms. We are not looking into reducing pressure on our major city centers and trying to come up with satellite areas. And even if we are coming up, we are not coming up with the proper communication system. As a result, people who are flocking to the big cities are not interested moving to the satellite towns because the communication is very poor. If they cannot come to the main city for job, education, and other purposes, why should they be interested in going there? So improper planning, lack of vision, and huge corruption and environmental pollution is plaguing our urban planning system. There has no doubt that urban planning or urban housing has grown. If every time, if you have an opportunity to fly from an aircraft, every city that you will be approaching, you will be amazed to see from that height how much big the city is, and everywhere there is no trees, no plants, no water bodies, only concrete jungle surrounding you. This is the reality that I'm talking about, that our cities are being taken over by urban spacing without no ecological and environmental planning, no planning for the long term sustenance of the cities, and the population is overgrowing in such a way that the city municipalities corporations are failing to cater their services, including medical services. So this is how the urban planning and urban spacing in India looks now. It is not promising, it is growing. There is no doubt about that. There's a lot of money invested in it. A lot of people are working in it. It's an employable industry. But at the same time, it's choking our city, it's choking the lifeline step by step. We are not aware. In the next 15, 20 years,
we are going to see the death of our cities in a stepwise fashion unless we restrict the growth of the cities and come up with establishing new cities and towns just on the vicinities of the existing cities and towns and plan properly, judiciously, and with environmental impact assessment. Thank you very much, Dr. Sharma. Once again, it has been a pleasure to be a part of this platform. Thank you. Thank you very much, Dr. Jagat. Now I would like to request Dr. Nishant Shukla ji. Nishant ji, pranam. Swagatam. प्रणाम, नमस्कार, नमस्कार। अर्बनाइजेशन जिस प्रकार से हम बढ़ते जा रहे हैं, अगर पहले इस चीज को हम समझें कि व्हाट इज द नीड ऑफ अर्बनाइजेशन एंड व्हाट वाज द थॉट बिफोर द इंडिपेंडेंस। इनिशियली इंडिया को एक रूरल कंट्री माना जाता था और रूरल कंट्री के हिसाब से जो हमारी इकोनॉमी थी वो रूरल इकोनॉमी पर ज्यादा आधारित थी। अब रूरल इकोनॉमी में पॉपुलेशन कम रहती थी, हाउस होल्ड नीड्स कम रहती थी, हाउसिंग की नीड्स भी उसी प्रकार से जो है ये कम रहती थी। और आज भी हम ये देखते हैं कि जो रूरल हाउसिंग है वो कहीं ना कहीं अर्बन हाउसिंग से काफी हद तक अलग है। जैसे जैसे अपॉर्चुनिटीज की बात आती गई, जैसे जैसे कॉलोनाइजेशन की बात आती गई, जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, हेल्थ केयर फैसिलिटी, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज ये घटती गई, वैसे वैसे अर्बनाइजेशन की नीड्स भी बढ़ती गई। और इनिशियली अगर हम देखें तो बिफोर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस दो ही सिटीज ऐसे थे कि जिनकी पॉपुलेशन 50 लाख से प्लस थी, बाकी के सभी सिटीज की पॉपुलेशन उससे काफी कम थी। धीरे धीरे ये परिस्थिति आ गई कि उनमें काफी चेंज होता गया। इनिशियली कलकत्ता, बॉम्बे, दिल्ली और मद्रास इस प्रकार से था। आज कलकत्ता पीछे होता गया, उसके बाद मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली और मद्रास। आज जो है ये चेंज ये है कि दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, कलकत्ता, मद्रास, अहमदाबाद, हैदराबाद। तो जिस प्रकार से अपॉर्चुनिटीज बढ़ती गई वैसे वैसे अर्बनाइजेशन बढ़ता गया। और आज हम अर्बन सेक्टर्स के प्रॉब्लम्स को देख रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन इज अ बिग प्रॉब्लम, पोल्यूशन इज अ बिग प्रॉब्लम, उसके बाद हाउसिंग इज अ बिग प्रॉब्लम। और हमारी की केवल ये बात है ऐसा नहीं है, इंडिया के संदर्भ में ही ये बात है ऐसा नहीं है। अगर 2017 या 2019 में जो ब्रिटिश इलेक्शन हुए थे उसकी वो भी जो है वो हाउसिंग के प्रॉब्लम्स पर ही जो है वो फाइट किए गए थे। और लंदन सिटी में इफ यू आर हैव टू गेट हाउस यू नीड अ लॉट ऑफ मनी, आपको जो है वो काफी सारा जो है वो पैसा चाहिए। और वहां पर जो है वो मॉलिक्यूलर हाउसेस की बात है, एक डबल डेकर बस की जितना एरिया होता है उतनी एरिया जो है वो हाउस के लिए होती है। आज मैं कुछ एक वीडियोस देख रहा था, स्मॉल एरिया मेकओवर, स्मॉल हाउस मेकओवर, तो उसमें जो है वो 6 स्क्वायर मीटर या फिर 10 स्क्वायर मीटर होम्स की बात हो रही है। एक रूम है, वहां पर आपको जो है वो अलग अलग चीजें जो है वो आपको सेट करनी है, आपका बेडिंग हो, आपको सोने की जगह हो, फिर आपके एसेंशियल्स हो, आपके क्लोथिंग हो, आपको नहाने की टॉयलेट की फैसिलिटी। तो उसको केवल 10 स्क्वायर मीटर में ही आप किस प्रकार से एडजस्ट करेंगे, सिंगल वन रूम। तो उसको आज जो है ये प्रॉब्लम है। मेगा सिटीज जैसे जैसे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे वहां पर ये प्रॉब्लम होती जा रही है। तो इन सभी चीजों को हमें अर्बनाइजेशन की हाउसिंग में समझना पड़ेगा, उनको एड्रेस करना पड़ेगा। इस चीज को हम एक एक करके आगे बात कर रहे हैं। गुजराती में एक कहावत है, खास करके बॉम्बे सिटी के बारे में, कि मुंबई नहीं कमानी, मुंबई में समानी। मुंबई में अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है और अपॉर्चुनिटीज, अर्निंग अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है, पर वहाँ की जो अर्निंग है वो केवल वहीं की वहीं जो है वो यूज अप हो जाती है, क्योंकि वहां पर हाउसिंग ही इतना कॉस्टली है कि टू गेट द हाउसेस इज ए बिग प्रॉब्लम। तो इन चीजों को हम एक एक करके देखते जाते हैं। तो अर्बन जो नीड्स हैं इसकी पहले हम बात करते हैं। तो बम्बई के संदर्भ में ही एक काफी अच्छा आर्टिकल आया था कि वहाँ की
स्लम्स को भी उसके भी जो है वो प्राइसेस जो है वो काफी हाई है, और उसमें धारावी स्लम के प्राइसेस को तो जो है वो हाईलाइट किया गया था कि वहाँ के प्राइसेस जो है वो दे आर एट पार विद द जेवीपीडीज की विच इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट पॉश एरिया ऑफ मुंबई। और उसकी जो है वो बेसिक नीड इस प्रकार से थी कि एक स्क्वायर फुट के एरिया में, सॉरी 10 स्क्वायर फुट के एक रूम में 5 से 6 लोग जो है वो रहते हैं, क्योंकि उनको ये जरूरत इस प्रकार से है कि उनकी जो सर्विस एरिया है, उनको जहां पर सर्विस के लिए जाना है वो इजी टू रीच है। तो बस तो लोकेशन के वाइज ऐसी एरियाज आइडेंटिफाई हो रहे हैं कि जहां पर हाउसिंग की रिक्वायरमेंट हो, पर उसके साथ साथ ऐसी कंडीशन में भी लोगों को बेसिक सैनिटेशन की फैसिलिटी मिले, बेसिक वेंटिलेशन की फैसिलिटी मिले, वाटर सप्लाई एंड सीवरेज की फैसिलिटी मिले, इसको हमें ध्यान में रखना चाहिए, और उसका प्लानिंग की भी जो है वो जरूरत है। केवल आज मल्टी स्टोरी, पहले तो ये था कि मल्टी स्टोरी बना ले और उसके हिसाब से हम नीड्स को सेटिस्फाई कर लेंगे, केवल ऊपर बनाते जाएंगे, पर उससे जो है वो आज नीड्स सेटिस्फाई नहीं हो रही है। आज माइक्रो हाउसिंग की भी जरूरत है, और माइक्रो हाउसिंग में 300 स्क्वायर फुट या फिर 600 स्क्वायर फुट में वन रूम किचन, या फिर उस प्रकार से आप जो है वो स्मार्ट डिजाइन बनाएं कि जिससे सभी जो है वो नीड्स को फुलफिल कर सके, एक न्यूक्लियर फैमिली इजीली स्टे कर सके, उस हिसाब से उनको डिजाइनिंग की जरूरत होती है। अर्बन हाउसिंग की क्या क्या मेरिट्स है कि ये चैलेंजेस, इसको चैलेंजेस है, तो जब चैलेंजेस हो तो ही उनका जो है वो कोई सॉल्यूशन निकलेगा। तो थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स में ये सभी चैलेंजेस को फेस करने के लिए, चैलेंजेस को अपकम करने के लिए अलग अलग डिजाइन जो है वो बन करके आई हैं, जहां पर वेंटिलेशन वगैरह की व्यवस्था हो, बेसिक सैनिटेशन के लिए कॉमन टॉयलेट्स की व्यवस्था हो, और उसी के साथ साथ वाटर सप्लाई की, पोर्टेबल वाटर की सप्लाई की व्यवस्था हो, और उसके साथ साथ टीवी वगैरह का भी हो सके। इसी के संदर्भ में एक पॉइंट, ये बेसिकली इससे रिलेटेड है, पर हम इस पहलू को छुए बगैर जो है वो नहीं रख सकते। व्हेन वी आर ट्रैवलिंग थ्रू मेगा सिटीज लाइक दिल्ली और मुंबई, वहां पर होटल स्टे जो है वो काफी महंगा रहता है, और खास करके अगर ट्रांजिट में है तो एयरपोर्ट के पास या फिर रेलवे स्टेशन के पास जो भी होटल्स होती हैं बिल्कुल कॉस्टली होती है, एंड दे हैव वेरी लिमिटेड फैसिलिटी। एयरपोर्ट के पास तो जो है वो काफी कॉस्टली रहती है और उसका जो है वो फैसिलिटी मिल जाती है, और रेलवे स्टेशन के पास कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। इसलिए उसी को ध्यान में रखते हुए जापान ने एक टेक्नोलॉजी को यूज किया, दैट इज कॉल्ड द पॉड। पहले के जमाने में बंक पैड्स की व्यवस्था रहती थी, उसी के थीम पर पोर्ट्स की जो है वो व्यवस्था हुई है, और पोर्ट्स में एक बेड की व्यवस्था हो, प्राइवेसी हो, टीवी हो, चार्जिंग फैसिलिटी हो, एयर कंडीशनिंग हो, और कॉमन टॉयलेट को बाथरूम हो, वहां पर अपना जो है वो डेली एसेंशियल्स वगैरह आप कर सकते हैं। तो जब हम बात कर रहे हैं हाउसिंग की, तो ये पक्ष भी हमें साथ में जो है वो जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अफोर्डेबिलिटी को भी हमें देखना है। बस नाउ कमिंग ऑन टू इन फैसिलिटीज के साथ साथ जो बाइंग कैपेसिटी है, बाइंग कैपिटल है, वो भी लोगों के पास सीमित हो रहा है। आज हम देख रहे हैं जामनगर जैसे इलाके जहाँ पर बी क्लास सिटी है, बी और सी कैटेगरी के सिटी में, जहाँ पर पॉपुलेशन 10 से 15 लाख के बीच में है, वहां पर भी जो एवरेज होम्स हो रहे हैं ये 500 स्क्वायर फुट। आज या तो टेनामेंट्स में अगर देखने जाए तो 500, 550, 600 स्क्वायर फुट पे ही ये बनते हैं, तो उसको इस प्रकार से सब प्लॉटिंग की डिवीजन कर दी जाती है, जिससे इसकी अफोर्डेबिलिटी बनी रहे, व्यक्ति जो है वो एक एवरेज मिडिल क्लास पर्सन ये परचेज कर सके। हाँ, जो एबल्ट हैं, जो ज्यादा खर्चा कर सकते हैं, वो थोड़ा दूर लेकर भी अपना मकान वगैरह बना लेते हैं, बाकी तो लोगों को इस प्रकार से शॉर्ट एरिया में इसकी जरूरत पड़ती है। कम्युनिटी डेवलपमेंट को हमें यहाँ पर फोकस करने की जरूरत होती है कि जब जब हम अर्बनाइजेशन, हाउसिंग
बात करते हैं तो कम्युनिटी डेवलपमेंट एक जो है वो इम्पोर्टेंट है, दैट इज ब्रिंगिंग द पीपल टुगेदर, डाइवर्स बैकग्राउंड है, कल्चर से उसको साथ में ला करके हम करते हैं, दैट इज कल्चरल डाइवर्सिटी, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द urbanization. Then the problems related with the urbanization, तो उसमें भी ये चीज हमने जो डिस्कस की, तो ये चीज, ये प्रॉब्लम भी है और अपॉर्चुनिटी भी है। आज छोटे एरिया में काफी लोग इकट्ठा होकर के रह रहे हैं, उसके कारण हेल्थ प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं। ट्यूबरकुलोसिस जो करीब करीब हम लोगों ने काफी हद तक कम कर दिया था, फिर से ट्यूबरकुलोसिस के केसेस बढ़ रहे। 2018 16 17 तक टीबी के केसेस जो है वो इंडिया में कम होते जा रहे थे, पर आफ्टर 18 देयर इज ए इंक्लाइन इन द केसेस ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। और उसमें भी जो मेजर कंसर्न है, केवल फ्रेश ट्यूबरकुलोसिस के केसेस नहीं, drug resistant tuberculosis, multi drug resistant tuberculosis, extreme drug resistant tuberculosis और complete drug resistant tuberculosis। 2014-15 तक ये complete drug resistant tuberculosis के केसेस केवल कुछ नंबर से 30-35 के बीच में थे, और 2019 में ये केसेस कुछ हजारों में आ गए हैं। तो ये इंक्लाइन, ये बढ़ना, ये कहीं ना कहीं ये अर्बनाइजेशन और उसके साथ एसोसिएटेड जो प्रॉब्लम है हाउसिंग की, उससे रिलेटेड। ये केवल स्लम्स में है ऐसा नहीं है, हर एक जगह पर है, पर स्लम्स में ये होने का सबसे बड़ा कारण कम एरिया में काफी लोगों का इकट्ठा होना माना जाता है। जैसे जैसे लोग क्लोज प्रॉक्सिमिटी में रहते हैं, वैसे वैसे ये प्रॉब्लम बढ़ती जाती है। सिमिलरली ऐसे एरिया में ओवर सैनिटेशन एक मेजर इश्यू है। टाउन प्लानिंग की अगर हम बात करें तो टाउन प्लानिंग में आज हम देखते हैं कि काफी सारे एरिया में फ्लडिंग की प्रॉब्लम है। थोड़ी बारिश हुई और फ्लड्स की प्रॉब्लम आके पानी भर जाता है, या फिर जो गटर वगैरह की व्यवस्था ठीक ना होने के कारण भी पानी जो ड्रेनेज ठीक से ना हो तो ये बढ़ जाता है। इवन शॉर्ट स्पान ऑफ रेन में भी ये प्रॉब्लम होता है। अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो मुंबई में 39 इंचेस बारिश 2005 में, 29 जुलाई 2005 को हैवी रेन हुई थी, और उस समय वाटर लॉजिंग होना एक कॉमन बात है, क्योंकि इतनी ज्यादा बारिश में तो कोई भी सिस्टम जो है वो कोलैप्स हो सकता है। पर आज हम देख रहे हैं कि वाटर लॉगिंग वगैरह 2 या 3 इंच की बारिश में भी हो जाता है, और ये कहीं ना कहीं जो अर्बनाइजेशन का प्रेशर है, लोगों को होम घर देने का जो प्रेशर है, छत देने का जो प्रेशर है, उसके कारण ऐसे एरिया में भी जो है वो मकान बनाने मकान बनाने पड़ रहे हैं, जहाँ पर इसकी पूरी व्यवस्था हम कर नहीं सके हैं। सैनिटेशन की, पीने की पूरी व्यवस्था हम नहीं कर सकते। काफी सारे एरिया ऐसे हैं जहाँ पर रिवर के साइड में भी जो नदी का जो एरिया होता है, वहां पर भी जो है ये मकान बनने लगे, और बारिश में वहां पर जो है वो फ्लडिंग की प्रॉब्लम जो है ये हो जाती है। तो ये सभी चीजें आज हमारी प्रॉब्लम भी है और आज हमारी अपॉर्चुनिटी है। जैसे जैसे हम अर्बनाइजेशन को की और बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे हमें अच्छे मकान, सस्टेनेबल हाउसेस की भी जरूरत है, अफोर्डेबल हाउसिंग की भी जरूरत है, जो कि व्यक्ति के खर्च कर सके, जो इनकम उनकी है उसके अनुपात में उनको जो है वो रिस्पेक्टेबल जो है ये लिविंग मिल सके, रिस्पेक्टेबल शेल्टर मिल सके। केवल हमें लो कॉस्ट शेल्टर की बात नहीं करनी है, पर उसके साथ साथ सस्टेनेबल अफोर्डेबल शेल्टर की बात करनी है। चाहे फिर वो 1 रूम किचन हो या फिर 1 बेड हॉल किचन हो, जैसे गवर्नमेंट ने अलग अलग कैटेगरीज रखी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज, एलआईजी कैटेगरीज, तो इस हिसाब से हमें उसको भी ध्यान में रखने की जरूरत है। उसी के साथ साथ आज अर्बनाइजेशन, कोई ट्रांसपोर्ट की एक प्रॉब्लम है, उसके संदर्भ में हाउसिंग की भी वहां पर रोल है, क्योंकि हर एक व्यक्ति, एक घर में एवरेज 2 या 3 स्कूटर होते हैं। अगर 2 व्यक्ति हैं और बच्चे हैं तो दोनों व्यक्ति के पास अपने अपने 2 व्हीलर्स होंगे, और अगर उसको वैन वगैरह चलाता होगा, ड्राइविंग करता होगा, तो एक कार होगी। तो एटलीस्ट वी शुड हैव प्रोविजन ऑफ हैविंग एटलीस्ट
3 vehicles, 1 4 wheel and 1 car and 2 wheelers। तो इस हिसाब से हमारी जो प्लानिंग हो रही है उसमें इसको भी इंक्लूजन करने की जरूरत है। आज मल्टी लेवल पार्किंग अभी होना शुरू है, ये भी कॉन्सेप्ट जो है वो आने लगा है। तो हमारी जो हाउसिंग कॉलोनीज या फिर हाउसिंग स्कीम बन रही है उसमें भी इसका इंक्लूजन करने की हमें जरूरत है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने विचार को यहाँ पर पूर्ण करता हूँ। अगर हम अपने घरों को अच्छी तरह से रखते हैं और अच्छी तरह से उसका निर्माण करते हैं, अगर टाउन प्लानिंग अच्छी है तो हमारी सेहत भी ठीक ठाक रहेगी। हाउसिंग की केवल इम्पोर्टेंस सोशियोलॉजी या फिर इकोनॉमी से संबंधित नहीं, इसका एक काफी बड़ा एस्पेक्ट हेल्थ के साथ भी संबंधित है। और इसके कारण प्रॉपर हाउसिंग ये कहीं ना कहीं हेल्थ केयर, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर मेजर के रूप में हम इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते और इसकी इम्पोर्टेंस को हमें समझना पड़ेगा और समझाना पड़ेगा एट द लेवल ऑफ टाउन प्लानिंग, एट द लेवल ऑफ सिटी प्लानिंग। आज हम स्मार्ट सिटीज की बात कर रहे हैं, तो स्मार्ट सिटीज में इन चीजों को हमें इंकॉर्पोरेट करना पड़ेगा और इंकॉर्पोरेट करना चाहिए। अगर हमें 2100 की बात करें, 2050 और 2100 इसकी हमें बात करनी, अगर हमें एक ग्लोबल रिस्पेक्टेबल नेशन के रूप में इंडिया को देखना चाहते हैं तो इस चीज को हम प्लानिंग में हमें लाना पड़ेगा। थैंक यू।